The annual Aurat March always draws strong, polarizing reactions from citizens across Pakistan. The most bizarre reaction, and unfortunately a common one, is to deny that gender inequality is, in fact, a problem in the country. I am writing with the hope that if you are someone who belongs to this category, or knows of someone who does, the following paragraphs will clearly show the stark gender imbalance in Pakistan. Rather than make an argument myself, we can let the numbers do the talking. Let us start with some examples of economic and labor market disparities. House ownership is one rough gauge to measure gender/wealth disparity. According to the Demographic and Health Survey, DHS, 2017-18, only 3% of surveyed women between the age of 15 and 49 years in Pakistan own a house. On the other hand, the same number for men is 72%. The Pakistani labor market shows similar disparity. The International Labour Organization estimates that Pakistan has one of the lowest female labor force participation rates in the world, only 25%. The same number for males is estimated at 81%. Part of the reason why female labor force participation in Pakistan is so low is that women end up taking on the bulk of unpaid work, for example, childcare, across the country. This leads to intra-household income disparities where men end up earning much more than women. What do we learn from these numbers? Broadly, that men in Pakistan own significantly more assets and are engaged in the paid labor market in far greater numbers than women, and hence earn more. Statistics paint a grim picture of Pakistani women. Let us look at examples of disparity in education and politics. The adult female literacy was estimated at 46% in 2019, while the same number stands at 69% for males. Within the realm of politics, male voter turnout in the 2018 general election exceeded female voter turnout by around 9.1%, based on the statistics of the Election Commission of Pakistan. In other words, 11 million more men voted in the election than women. If you look at the gender disaggregation of our National Assembly, approximately only 20% of the parliamentarians are women, and that too in large part on reserved seats. What do we learn from this? That Pakistanis invest more in men's education than in women's. That women's electoral preferences are less well reflected in our governance system, compared to males, because of a lower female voter turnout as well as a lower presence of females in our national parliament. Let us now try to understand the horrific challenge of violence against women. According to DHS, 2017-18, a whopping 28% of women in Pakistan between 15 and 49 years of age have experienced physical violence. 26% of married women who have experienced spousal physical or sexual violence have sustained injuries. Let that sink in. This grim paragraph shows that violence against women remains a huge challenge in the country. The gender challenge within Pakistan relates to our values. Let us bring in some data from the World Values Survey, 2017-2022, that relates to some of the disparities mentioned in this piece. Starting with economic disparities, 72.1% of individuals in the WVS sample either strongly agree or agree with the statement that there is a problem if women have more income than their husbands. A whopping 85.3% either strongly agree or agree that men have more right to a job than women do. Moving on to political disparities, 75.8% either strongly agree or agree that men make better political leaders than women do. There is, of course, much more nuance behind each of the numbers that have been cited above. There has also been progress on various dimensions of gender disparity in the country over time, thanks to increasing awareness of the gender disparities. The slowly rising labor force participation and female literacy rates are among the few examples of progress. The objective here has not been to delve deep into each figure but to show that gender disparities in Pakistan are both pervasive and undeniable. This stark gender imbalance can be seen across most socio-economic sectors within the country, including income, wealth, politics, education, and many more. Hence, before a defensive, knee-jerk reaction to the Aurat March sets in,
we should take a hard look at the gender imbalance that surrounds us. Rather than deny that there is a problem and come up with all sorts of justifications, we need to accept that gender imbalance is a huge challenge in our country. Recognizing the problem is the first step towards making progress on this crucial aspect of national life. The writer has a doctorate from the University of Oxford and is graduate of the Harvard Kennedy School of Government. Published in Dawn, March 9, 2023. Subscribe our channel. Dawn Vocabulary. youtube.com/@dawnvocabulary. सालाना औरत मार्च पर पाकिस्तान भर के शहरियों की जानिब से हमेशा सख्त और पोलराइजिंग रद्द-अमल सामने आता है। सबसे अजीब रद्द-अमल और बदकिस्मती से एक आम रद्द-अमल इस बात से इनकार करना है कि सिंफी अदम मुसावात दर हकीकत मुल्क में एक मसला है। मैं इस उम्मीद के साथ लिख रहा हूं कि अगर आप इस जुमरे से ताल्लुक रखने वाले शख्स हैं या किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जो ऐसा करता है, तो मुंदरजा ज़ैल पैराग्राफ पाकिस्तान में सिंफी अदम तवाज़ुन को वाज़ेह तौर पर ज़ाहिर करेंगे। खुद दलील देने के बजाय हम अदाद व शुमार को बात करने दे सकते हैं। आइए माशी और लेबर मार्केट में अदम मुसावात की कुछ मिसालों से शुरू करते हैं। घर की मलकियत सिंफी / दौलत के अदम मुसावात की पैमाइश करने के लिए खाम पैमाइश है। डेमोग्राफिक एंड हेल्थ सर्वे DHS 2017-18 के मुताबिक पाकिस्तान में 15 से 49 साल की उम्र के दरमियान सिर्फ 3% खवातीन के पास घर है। दूसरी जानिब मर्दों के लिए भी यही तादाद 72% है। पाकिस्तानी लेबर मार्केट में भी इसी तरह की अदम मुसावात पाई जाती है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का अंदाजा है कि पाकिस्तान दुनिया में लेबर फोर्स में ख्वातीन की शिरकत की शरह सबसे कम यानी सिर्फ 25% है। मर्दों के लिए इसी तादाद का तखमीना लगाया गया है। पाकिस्तान में लेबर फोर्स में ख्वातीन की शिरकत इतनी कम होने की एक वजह यह भी है कि मुल्क भर में ख्वातीन को ज्यादातर बिला मुआवजा काम, मिसाल के तौर पर बच्चों की देखभाल, करना पड़ता है। इसकी वजह से घरेलू आमदनी में अदम मुसावात पैदा होती है, जहां मर्द ख्वातीन के मुकाबले में बहुत ज्यादा कमाते हैं। हम इन अदाद व शुमार से क्या सीखते हैं? वसी पैमाने पर पाकिस्तान में मर्दों के पास नुमायां तौर पर ज्यादा असासे हैं और वो ख्वातीन के मुकाबले में कहीं ज्यादा तादाद में तनख्वाहदार लेबर मार्केट में मसरूफ हैं और इस वजह से ज्यादा कमाते हैं। अदाद व शुमार पाकिस्तानी ख्वातीन की एक खौफनाक तस्वीर पेश करते हैं। आइए तालीम और सियासत में अदम मुसावात की मिसालों पर नजर डालते हैं। 2019 में बालिग ख्वातीन की खानदगी का तखमीना 46% लगाया गया था, जबकि मर्दों के लिए यह तादाद 69% है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अदाद व शुमार के मुताबिक 2018 के आम इंतखाबात में मर्द वोटर्स टर्न आउट ख्वातीन वोटर्स टर्न आउट से तकरीबन 9.1% ज्यादा था। दूसरे लफ्जों में ख्वातीन के मुकाबले में 11 मिलियन ज्यादा मर्दों ने इंतखाबात में वोट डाला। अगर आप हमारी कौमी असेंबली की सिंफी तकसीम पर नजर डालें तो तकरीबन 20% अरकान पार्लियामेंट ख्वातीन हैं और वो भी बड़ी तादाद में मखसूस नशिस्तों पर। हम इससे क्या सीखते हैं कि पाकिस्तानी ख्वातीन के मुकाबले में मर्दों की तालीम पर ज्यादा सरमायाकारी करते हैं। ख्वातीन की इंतखाबी तरजीहात मर्दों के मुकाबले में हमारे गवर्नेंस सिस्टम में कम नजर आती हैं, क्योंकि हमारी कौमी पार्लियामेंट में ख्वातीन वोटर्स की तादाद कम होने के साथ साथ ख्वातीन की मौजूदगी भी कम है। आइए अब हम ख्वातीन के खिलाफ तशद्दुद के हौलनाक चैलेंज को समझने की कोशिश करते हैं। DHS 2017-18 के मुताबिक पाकिस्तान में 15 से 49 साल की उम्र की 28% ख्वातीन को जिस्मानी तशद्दुद का सामना करना पड़ा है। 26% शादीशुदा ख्वातीन जिन्हें इज़्दिवाजी जिस्मानी या जिनसी तशद्दुद का सामना करना पड़ा है, उन्हें चोटें आई हैं। से डूबने दो। ये संगीन पैराग्राफ जाहिर करता है कि मुल्क में ख्वातीन के खिलाफ तशद्दुद एक बहुत बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान के अंदर सिंफी चैलेंज हमारी अक़दार से जुड़ा हुआ है। आइए वर्ड वैल्यूज सर्वे 2017-2022 के कुछ अदाद व शुमार लाते हैं, जो इस मजमून में बयान करदा कुछ तफावत से मुतालिक हैं। माशी अदम मुसावात से शुरू करते हुए WVS नमूने में 72 अफराद तो इस बयान से
सख्ती से मुत्तफिक रहें कि अगर ख्वातीन के पास अपने शोहरों से ज्यादा आमदनी है तो कोई मसला है। 85.3% तो सख्ती से मुत्तफिक हैं कि मर्दों को ख्वातीन के मुकाबले में मुलाजमत का ज्यादा हक हासिल है। सियासी अदम मसावात की तरफ बढ़ते हुए 75.8% तो मजबूती से मुत्तफिक हैं कि मर्द ख्वातीन के मुकाबले में बेहतर सियासी रहनुमा बनाते हैं। जाहिर है, ऊपर बयान किए गए अदाद व शुमार में से हर एक के पीछे बहुत ज्यादा बारीकी है। वक्त के साथ साथ मुल्क में सिनफी अदम मसावात की मुख्तलिफ जहतों पर भी पेशरफ्त हुई है, जिसकी बदौलत सिनफी अदम मसावात के बारे में बेदारी में इजाफा हुआ है। आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती हुई लेबर फोर्स की शिरकत और ख्वातीन की खानदगी की शरह तरक्की की चंद मिसालों में से है। यहाँ मकसद हर अदाद व शुमार की गहराई में जाना नहीं है, बल्कि ये दिखाना है कि पाकिस्तान में सिनफी तफावत वसी और नाकाबिल तरदीद है। ये शदीद सिनफी अदम तवाज़ुन मुल्क के अंदर ज्यादातर समाजी और इक्तिसादी शुबों में देखा जा सकता है, बशमूल आमदनी, दौलत, सियासत, तालीम और बहुत कुछ। लिहाजा औरत मार्च पर दिफाई और घुटने टेकने वाला रद्द अमल सामने आने से पहले हमें अपने अर्द गिर्द मौजूद सिनफी अदम तवाज़ुन पर कड़ी नजर डालनी चाहिए। इस बात से इनकार करने और हर तरह के जवाब पेश करने के बजाय हमें यह तस्लीम करने की जरूरत है कि हमारे मुल्क में सिनफी अदम तवाज़ुन एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इस मसले को तस्लीम करना कौमी जिंदगी के इस अहम पहलू पर पेशरफ्त की जानिब पहला कदम है। मजमून निगार ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की है और वो हार्वर्ड कैनेडी स्कूल ऑफ गवर्नमेंट से फारिग अल तहसील हैं। अखज़ शुदा बतारीख 9 मार्च 2023। For more videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary. YouTube.com/@dawnvocabulary. Like, subscribe, share and comments.